Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Khandwal Physics. तो रिफ्लेक्शन पर आम गोटे नुआ फेनोमेनन ऊपर आज डिस्कशन करबा को जाउचे रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन काहा को कहा जाए, रिफ्रैक्शन हेले कौन हुए ता ऊपर पुंखानुपुंख डिस्कशन पाखापाखि 10टा रु वीडियो 10टा रु 12टा पर्यंत वीडियो हमरो चलिबो. तो आसो आरंभ करबा रिफ्रैक्शन, the beautiful phenomenon exhibited by light. Refraction. तो refraction कहाँ को कहा जाए? What is refraction? So listen carefully. So refraction, so the bending of light, the bending of light as it passes from one transparent medium to another is called refraction. The bending of light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction. तो रिफ्लेक्शन को जदि टिके हम मने पकेबा, रिफ्लेक्शन रे आलोक जो मीडियम रो आसुथिला जेते बेले गोटे इंटरफेस सहित से इंटरैक्ट करूथिला, जो मीडियम रो आसुथिला सेही मीडियम को फेरिकी जाउथिला. किंतु वर्तमान आमे दुईटा ट्रांसपेरेंट मीडियम को जेते बेले आमे भेटिबा, यू सी सपोज ये होची गोटे सरफेस ऑफ सेपरेशन, याकू कहा जाए सरफेस ऑफ सेपरेशन, और तमे ताकू कहि परिबो इंटरफेस और कहि परिबो रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ताहले आलोक सपोज दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस and this is your medium 1 and this is your medium 2. गोटे मीडियम रो जेते बेले आलोक आउ गोटे मीडियम को गति करे, आउ जदी इंसिडेंस टा ओब्लिक इंसिडेंस हेई थाए माने नॉर्मल देई कि न आसी कि आलोक जदी ओब्लिकली इंसिडेंस हुए ताहेले तार गति पथरे परिवर्तन हुए. एक्चुअली जदी सेम मीडियम हेइतांदा, जदी होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम हेइतांदा ताहेले आलोक सब बेले सरल रेखा रे गति करे. हम जानि छे गोटे होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम रे आलोक सरल रेखा रे गति करे. जदी पूरा गोटे मीडियम जदी एटा हेइतांदा आलोक सरल रेखा रे गति करितांदा. किंतु देखो आलोक गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को जते बेले गति करे सेति बेले निजर गति पथरे तार परिवर्तन हुए. एइदर सी नॉर्मल आड़ को आसी पारे, देखो नॉर्मल आड़ को आसी पारे, नॉर्मल टू दूर को भी जाई पारे. तो को केस रे नॉर्मल आड़ को आसीबो, को केस रे नॉर्मल टू दूरे जिवो, या ऊपर हमें आगो को डिस्कशन करबा. तो मु नॉर्मल आड़ को केस तुमको देखैछि. सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ओके, जोटा कि हमर सोर्स रु बाहर की आसीची, गोटे सोर्स रु गोटे रे आसीची, आसीकी गोटे इंटरफेस, जो सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस दुईटा मीडियम को सेपरेट करूची. ओके, जाको हम कहि परिबा बाउंड्री भी कहि परिबा, व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया, मीडियम 1 को मीडियम 2 को जे जो सरफेस ता सेपरेट करूची ताको हमें सरफेस ऑफ सेपरेशन कहि परिबा, ताको इंटरफेस कहि परिबा, ताको गोटे रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कहि परिबा. जते बेले इंसिडेंट रे आसी कि एठी पडिबो, पुनी आउ गोटे मीडियम को जते बेले से ट्रैवल करिवो सेते बेले तार डेविएशन हबो पाथ रे. दिस डेविएशन और बेंडिंग ऑफ द बीम as it travels from one medium to another medium, if there is oblique incidence, then this phenomenon is called refraction. এই phenomenon को refraction बोली कहा जाए. आकु अलगा गोटे डेफिनेशन भी हम दे परिबा. सेकंड डेफिनेशन हमरो, तो रिफ्रैक्शन
is a phenomenon by virtue of which by virtue of which a ray of light going from one medium to another undergoes a change in its velocity. आउ गोटे भी डेफिनेशन आमे दे परिबा ए वेलोसिटी जगह रे आमे वेवलेंथ भी लिखि परिबा चेंज इन इट्स वेवलेंथ लिखिले मध्य आउ गोटे डेफिनेशन हम रही जिवो ता माने एई डेफिनेशन रो जणा पडुची ए सेकंड डेफिनेशन रो हमको जणा पडुची आलोक जते बेले गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को अतिक्रम करे ताले सेते बेले तार वेलोसिटी परिवर्तन हुए this change in velocity of the light when it travels from one medium to another is also called refraction. जते बेले आलोक गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को गति करे तार वेवलेंथ भी परिवर्तन हुए this phenomenon of change in wavelength is also called refraction. ओके तो बहुत कथा हमें डिस्कशन करबा आगो को सो डेफिनेशन ऊपर टिक आईडिया आसी गला बोध हुए अच्छा देखो वर्तमान हमें डिस्कशन करबा जेते बेले आलोक गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को गति करे आमे जानिचे वेलोसिटी परिवर्तन हुए बोले वर्तमान हमें ए डेफिनेशन रो जानिबा को पाइले ताहाले सुनो गोटे ब्यूटीफुल फिजिकल क्वांटिटी जोटा कि रिफ्रैक्शन चैप्टर सरीबा पर्यंत आमे ताको व्यवहार करबा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जहा को कहबा हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स absolute refractive index ये जो absolute refractive index which is a physical quantity which is generally represented by mu or n it is represented by mu or n so what is its definition refractive index कहा को बुझिबा so refractive index mu और absolute refractive index विषय रे हम डिस्कशन करूचे तो absolute refractive index of a medium is equal to ratio of the velocity of light in free space or vacuum divided by velocity of light in a medium आपको भल रे बुझिबा सुनो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहार बाहर करा जाए गोटे मीडियम रो बाहर करा जाए विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ताले सुनो आमे गोटे काम करिबा हमर प्रथम मीडियम एमतिका गोटे मीडियम लेबा जोटी कि हमर किछि नथिबो ओके जाको आमे कहबा फ्री space or your vacuum we know when light travels in vacuum it is the maximum velocity of light आलोकर गति वैक्यूम रे सबुठु अधिका जाको हमें c द्वारा रिप्रेजेंट करूचे the velocity of light in vacuum is represented by c which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. The velocity of light in vacuum is maximum and equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is represented by C. Suppose गोटे light vacuum रे आसिला free space रे अतिक्रम कला पोरे suppose गोटे medium रे आसी की पहुंचिला so this is a medium आको 2 आउ कहीं ना देबा ओके vacuum रे आसिला गोटे medium रे पहुंचिला एई medium को जते बेले पास दे के पास करिवो तार वेलोसिटी कमी जीवो प्लीज कीप इन माइंड मु तुम गबे कहिली वैक्यूम रे तार वेलोसिटी मैक्सिमम
ताले जे कोनोसी मीडियम भितर जते बेले आलोक गति करिवो अदर देन वैक्यूम तार वेलोसिटी रे परिवर्तन आसीबो परिवर्तन माने वेलोसिटी कमिबो ताले एटे वेलोसिटी कमी जिवो ए मीडियम रे वेलोसिटी सपोज हे गला तार v तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम को हमें v द्वारा रिप्रेजेंट करिबा तो बाय डेफिनेशन mu must be equal to c velocity of light in free space is c and velocity of light in a medium it is represented by v. So this is the first formula. Aku ame kemti padhiba? It is the absolute refractive index of the medium with respect to vacuum. With respect to vacuum कहिबा आवश्यक नाही. Absolute refractive index रो meaning होती सेया. ताको एमती भी हम कहि परिबा this is the relative refractive index of a medium with respect to vacuum. जदि प्रथम मीडियम ता हमर वैक्यूम हेतिबो आ सेकंड ता जे कोनसे मीडियम हेतिबो ताहले से मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को कहा जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ताहले सुनो ए जो म्यू इज इक्वल टू ऊपर देखो जो सी अछि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. आ गोटे मीडियम को जते आलोक गति करिवो तार वेलोसिटी कमी जिवो जदि वेलोसिटी कमिवो ताहले ए रेशियोटा सब बेले मस्ट बी ग्रेटर देन 1. प्लीज देखो refractive index is equal to c divided by v. c is the maximum value of light in vacuum. जे कौन से मीडियम को आलोक जते बेले गति करिवो वेलोसिटी कमिवो जो न्यूमरेटर रे गोटे बहुत बड़ संख्या रहिला डिनोमिनेटर रे छोट संख्या रहिला सो mu is greater than 1. mu is greater than 1 for a medium. Please keep in mind absolute refractive index of a medium is always greater than 1. Is always greater than 1. Clear? Okay. तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करिबा गोटे गोटे पॉइंट को हमें डिस्कशन करिबा. ओके सो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर गोटे गोटे पॉइंट को हमें डिस्कशन करिबा. सो नंबर 1 पॉइंट रे हमें डिस्कशन करिबा कहा विषय रे देखो नंबर 1 रे. सो इट इज ए स्केलार क्वांटिटी. इट इज ए स्केलार क्वांटिटी. इट इज ए स्केलार क्वांटिटी. ओके absolute refractive index ro konosi direction nahi. Okay, it is purely a number. So number 2, so it is unitless and dimensionless quantity. It is a unitless and dimensionless quantity. और यूनिट नहीं कि डायमेंशन नहीं कहीं कि ऊपर देखो अच्छी वेलोसिटी तले भी अच्छी देखो वेलोसिटी. The ratio of same physical quantities. It is purely a number which is always greater than 1 बोली तुमको कहली for a medium. So number 3 रे आमे जानी चे C इक्वल जते बेले आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विषय रे आमे डिस्कशन करिबा सेठी गोटे बहुत बढ़िया फार्मूला हमको मिलिबो. C will be equal to 1 divided by root over epsilon naught mu naught. So this epsilon naught or epsilon 0 is called your permittivity of free space. A mu 0 को कहा जाए permeability of free space. Okay, so 1 divided by root over epsilon naught mu naught is equal to your velocity of light. And what a particular medium pai velocity will be equal to 1 divided by root over of epsilon and mu. This epsilon is the permittivity of the medium. This is the
permeability of the medium ताहले डेफिनेशन अनुसारे आमे refractive index or absolute refractive index of this medium where the velocity is v will be equal to c divided by v. You see this formula, okay? So mu is equal to c divided by v. So c is equal to 1 divided by root over epsilon naught mu naught divided by 1 divided by root over epsilon and mu. So finally we will get root over of epsilon mu divided by root over of epsilon naught mu naught, and this will be equal to root over of epsilon divided by epsilon 0 multiplied by mu divided by mu 0. Okay, and finally, you know, this is epsilon by epsilon 0 is nothing but your relative permittivity, and mu by mu naught is nothing but your relative permeability. It's a beautiful formula. Please remember, mu ro गोटे बहुत बढ़िया फॉर्मूला हमको मिला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी रो मल्टीप्लिकेशन रो रूट ओवर. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट नंबर 4 रे यू सी इन vacuum we know velocity of light is 1. Velocity of light is c. Velocity of light is c. Therefore mu tuमको जदि पचारिबी what is the absolute refractive index of vacuum, जोठी कौनसी मीडियम नाही जो जे होचे हमर वैक्यूम और फ्री स्पेस तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते. सो डेफिनेशन अनुसार इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम. हमर वर्तमान मीडियम की वैक्यूम जोटे कि किछ नाही, नो मीडियम. c डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 1. तो हमें मन रखिबा absolute refractive index of a free space or vacuum or free space is equal to 1. ताले absolute refractive index रो minimum value केते ही परिबो 1. जे कोनोसी गोटे मीडियम को जदि हमें गति करिबा ताले absolute refractive index टा greater than 1 हबो. क्लियर? ओके, सो इंपोर्टेंट पॉइंट सब हम कलेक्ट करूचे. नंबर 5. तो नंबर 5 रे देखिबा हमें. सो यू सी, तो म्यू ग्लास absolute refractive index of the glass is greater than absolute refractive index of the water is greater than the absolute refractive index of the air. तम मन भीतर गोटे प्रश्न उठुथिबो, ग्लास रो absolute refractive index ता केमती अधिका हला, वाटर रो ताठु कम, एयर रो ताठु कम, आपण केमती जानिले सर? तो मन भीतर गोटे क्वेश्चन उठुथिबो. एक्चुअली देखो फार्मूला को टिके देखो. प्रथम फार्मूला हमें जो लिखिथिले, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ओके, ऊपर देखो c रहिला व्हिच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. तो माने एठू क्लियरली जना पडुची जे म्यू ऊपर देखो c इज कांस्टेंट क्वांटिटी, सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. जो मीडियम रे आलोकर गति कम सेठी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता अधिका. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका माने इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जार म्यू अधिका ताको हमें कहिबा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो ऑप्टिकली जदि डेंसर मीडियम हला आलोकर गति कम ही जिवो. आ देखा जाईची
ग्लास रे हमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा अधिका ताठू कम वाटर रे ताठू कम एयर रे. Its meaning is that the velocity of light in glass is less than the velocity of light in water is less than velocity of light in air. तो एयर रे पाखा पाखी 3 into 10 to the power 8 meter per second. वैक्यूम रे जतिकी गति एयर रे पाखा पाखी close to C. Close to C. तेणु करी एयर रे मध्य आमे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 बोली आमे मानुचे. ओके 1 रु टिक्के अधिका तथापि आमे ताको 1 बोली मानि की चलिबा. तो देखो एयर रे वेलोसिटी कोन अधिका त माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हबो कम हबो. तो देखो सॉरी this is velocity in air. Sorry. So देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेहेतु एयर रो सबठु कम कोन पई कम जेहेतु 3D वेलोसिटी अधिका जेतेबेले आलोक वाटर को पळे आसीबो एयर रु जदी वाटर को आसीबो वेलोसिटी कोन हबो आहुरी कमी गला माने इट इज ऑप्टिकली डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ठू आर डेंसिटी अधिका ऑप्टिकल डेंसिटी नॉर्मल मास पर यूनिट वॉल्यूम सही डेंसिटी नहीं इट इज ऑप्टिकली डेंसर बोलिया को कहा जाए. पुनी देखो वाटर रु जते बेले आलोक आसिकी ग्लास भितर पसिबो जते बेले तार वेलोसिटी आहुरी कमी जिवो ता अर्थ आमे कहिबा सॉरी ग्लास इज मोर डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जणु करी तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू अधिका हबो. Clear to all of you? This is a very very important point. Please keep in mind. जोठी velocity जते कमिबो जो मीडियम रे आलोकर गति जते कमिबो ताकू कहिबा हमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर जोठी आलोकर गति अधिका सेटा होची ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ता माने आमे जदी एपटु आसीबा एयर टू वाटर ता होची ऑप्टिकली डेंसर वाटर और ग्लास को जदी कंपेयर करिबा वाटर टू ग्लास होची ऑप्टिकल डेंसर जदी एई पटु जिबा ग्लास तुलना रे वाटर ता होची ऑप्टिकली रेयर वाटर और ग्लास को जदी वाटर और जदी एयर को तुलना करिबा तले वाटर टू एयर ता होची ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो वेलोसिटी जते बड़ी जीवो सेते रेयर मीडियम आड को जिबा वेलोसिटी जते कमी आसीबो आमे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आड को जिबा. तामाने ऑप्टिकली डेंसर जते हबो आलोक को सिए सेते स्पीड रे जिबा पई अनुमति दबनी वेलोसिटी कमी जिवो. क्लियर टू ऑल ऑफ यू इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर अस. ओके तो नंबर 6 को हमें प्रोसीड करिबा. प्रत्येक पॉइंट गोटे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छा ओके ताले फाइनली म्यू इज इक्वल टू हमरो c डिवाइडेड बाय v अछि c डिवाइडेड बाय v अछि. आमे जानि छे देखो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आडको जाउ छे आमे. सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ lambda. So lambda wavelength is one of the characteristics of a wave. जेतेबे आलोक गति करे तरंग आकार रे गति करे बोली हम जानिचे. ओके गोटे क्रेस्ट कंजिक्यूटिव क्रेस्ट भितरे जो दूरता ताको आमे वेवलेंथ बोली कहूछु आ लैम्बडा द्वारा ताको आमे रिप्रेजेंट करूछु. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा wavelength of light. Okay, so as you see as mu is equal to c by v जेहेतु v जते अधिका वेलोसिटी जते अधिका हबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जते कम हबो ताहले this implies you can say the mu is also inversely proportional to lambda. तो वेवलेंथ जते अधिका हबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मध्य सेते कम हबो. वेवलेंथ जते अधिका हबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन हबो सेते कम हबो. दिस इज अनदर पॉइंट जोटा थिला मोर नंबर 6 पॉइंट.
ता माने एटी गोटे एग्जांपल हम नेबा गोटे एग्जांपल देखो नेबा आमे जदी VIBGYOR vigor violet indigo blue green yellow orange red ये होचे हमरा लाइट ओके तो लाइट रो जोटा को हमर विजिबल लाइट रो एटा होचे हमर कलर गुडा को हमें जानि छे the wavelength of lambda wavelength of violet light is less than the wavelength of the red light तो wavelength जेते अधिका हबो माने velocity of red light is greater than the velocity of your violet light okay that means the refractive index of violet light is greater than the refractive index of the red light inversely proportional okay जोठी velocity अधिका सेठी refractive index कम okay velocity अधिका refractive index कम wavelength अधिका refractive index कम inversely proportional refractive index is inversely proportional to velocity refractive index is inversely proportional to wavelength clear to all of you so next important point को जीवा ताहले देखो तो C is equal to हमें जानी चे nu times lambda 0 and V is equal to nu times lambda ये होची in free space ये होची हमरा in a medium ताहले definitely your mu is equal to C divided by V so this is equal to C is equal to nu times lambda 0 divided by nu times lambda जेते बेले आलोकर रिफ्रैक्शन हुए माने रखो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आलोकर जेते बेले रिफ्रैक्शन हुए माने गोटे मीडियम रु सी जेते बेले आ गोटे मीडियम को गति करे तार फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे फ्रीक्वेंसी परिवर्तन हुए नहीं बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स एटा मीडियम रो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं एटा होची सोर्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स तेनु करी फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन रे परिवर्तन हुए नहीं आ गोटे जिंस भी परिवर्तन हुआ नहीं कलर भी परिवर्तन हुए नहीं बिकॉज कलर डिपेंड्स अपॉन योर फ्रीक्वेंसी कलर भी परिवर्तन हबनी आ फेज भी परिवर्तन हबनी फेज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट color will not change phase will remain constant in refraction परिवर्तन हुए velocity and wavelength please keep in mind velocity और wavelength परिवर्तन हुए किंतु frequency और phase constant रहे ये आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हमर ओके ताहले frequency जेहेतु constant रहे तेनो आलोक जेते बेले फ्री स्पेस रे गति करे C is equal to velocity of light will be equal to frequency times wavelength. It has our formula. Okay. And velocity of light in a medium is equal to frequency तो देखो constant रहिला किंतु wavelength देखो change ही जीवो ताहले mu is equal to C by V is equal to C जगह में substitute कली nu times lambda 0 V जगह में substitute कली nu times lambda तो nu cancels out तो mu absolute refractive index रा गोटे नुआ डेफिनेशन आसिला lambda 0 divided by lambda this is another definition of your absolute refractive index so absolute refractive index of a medium with respect to vacuum कहबा दरकार नहीं कहीं absolute refractive index माने it is with respect to vacuum so absolute refractive index of a medium is equal to the ratio of wavelength of light in vacuum divided by wavelength of light in that medium clear to all of you another important point हमरा ये थिला so next point को हमें जाउचे next point रे देखिबा हमें relative refractive index what is the relative refractive index what is the relative refractive index
सो वर्तमान पर्यंत जो डिस्कशन करूथिले हमर प्रथम मीडियम थिला वैक्यूम जाको तो हम मीडियम कहि परिबानी इट इज वैक्यूम प्रथम हमर जोटे आलोक गति करि के आसुतिला सेटा वैक्यूम थिला तापर से गोटे मीडियम को जाउथिला आमे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम बार करूथिले विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम किंतु एबे कोन करिबा आमे सपोज एटा होचे हमर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जोटा कि हमर दुईटा मीडियम को सेपरेट करूची एटा होचे गोटे सरफेस एटा लाइन नुह एटा होचे गोटे सरफेस ये होचे तार नॉर्मल ओके सपोज दिस इज मीडियम नंबर 1 दिस इज मीडियम नंबर 2 एठी गोटे मीडियम अछि अदर देन वैक्यूम एठी आउ गोटे मीडियम अछि अदर देन वैक्यूम आलोक जदि गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को मनकर अतिक्रम कला आमे जनरली कौन करिबा ऑप्टिकली रेरार मीडियम रु ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को आलोक को गति करेबा ओके ऑप्टिकली रेरार मीडियम रो मीनिंग होची कोन एठी आलोकर गति कम सॉरी आलोकर गति अधिका जोठी आलोकर गति अधिका ताको ऑप्टिकली रेरार मीडियम कहा जाए जोठी आलोकर गति कमी जाए ताको कहा जाए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्लियर तो आलोक जते बेले ऑप्टिकली रेरार मीडियम रो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आड़ को गति करे इंसिडेंट रेटा रिफ्रैक्शन ही सारला परे रिफ्रैक्टेड रेटा नॉर्मल आड़ को आसी जाए तो एटा एक्चुअली तार इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एतिकी तार डेविएशन हुए आको डेल्टा द्वारा हम रिप्रेजेंट करिबा या कथा हमें पर डिस्कशन करिबा डेविएशन कोन केतिकी हुए ता ऊपर हमें पर डिस्कशन करिबा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज ए जो मीडियम नंबर 1 रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कर होची μ1 ए जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जोटा को हमें नंबर 2 मीडियम बोली ना देइचे सपोज यार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची μ2 देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एमती ताको लिखा जाए μ21 जहार हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करूचे ताको राइट साइड रे लिखिबा विथ रेस्पेक्ट टू जो मीडियम हम बाहर करूचे ताको लेफ्ट साइड रे रखिबा ताको पढिबा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट will be equal to μ2 divided by μ1 will be equal to μ2 divided by μ1 okay तो is equal to μ2 is equal to हमें जानी चाहिए it is c divided by v2 मने पका प्रथम डेफिनेशन हमारा velocity of light in vacuum divided by velocity of light in this medium number 2 medium ताको हमें v2 बोली ना रखिबा so similarly μ1 is equal to c divided by v1 this is the absolute refractive indices okay तो μ2 जगह हम यदि सब्स्टिट्यूट करिबा c divided by v2 divided by c divided by v1 ताले definitely you will get okay c will cancel out v1 goes up तो v1 divided by v2 क्लियर ताहले फाइनली गोटे रिलेशन हमको मिलुची μ21 is equal to μ2 by μ2 divided by μ1 is equal to v1 divided by v2 because refractive index and velocity are inversely proportional we know okay you see refractive index and velocity are inversely proportional so μ2 by μ1 is equal to v1 by v2 so is equal to बेटिके देखि परिबो इठी ताहाले you see आको जदी हम लिखिबा देखो एमति लिखिबा so frequency times wavelength in that medium divided by frequency which remains constant when light travels from one medium to another medium frequency परिवर्तन हुए नि रिफ्रैक्शन रे तनो करी न्यू इटे भी रखिली न्यू तो जते बेले प्रथम मीडियम रे आलोक गति करे तार वेवलेंथ सपोज थिला लैम्बडा 1 द्वितीय मीडियम को जते बेले अतिक्रम करि के आसिला सेतिकी बेले तार वेवलेंथ सपोज हे गला लैम्बडा 2 दिस फ्रीक्वेंसी कैंसल्स आउट तो फाइनली यू विल गेट लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2 आको जदी टिके मु इरेज कर देबी
एटा को जदी टिके मु इरेज कर देबी फ्रीक्वेंसी को काटी देबा परे you will get a beautiful formula, that is relative refractive index of second medium with respect to first will be equal to mu2 by mu1. That means absolute refractive index of the second medium divided by absolute refractive index of the first medium, which is equal to velocity of light in the first medium divided by velocity of light in the second medium, which is equal to ratio of wavelength of light in first medium to the wavelength of light in second medium. Clear? It's a very very important formula. आगो को आहुरी बहुत कथा हमें डिस्कशन करबा को जाउचे ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर. Okay, please keep in mind. So next point होउची मोर relative refractive index. Relative refractive index generally of a optically denser medium with respect to optically rarer medium, तो mu is equal to optically denser with respect to rarer. Refractive index generally ए जिनिस ही कंसीडर करा जाए relative refractive index of the denser medium with respect to rarer medium is equal to mu d divided by mu r. Okay, is equal to velocity of light in rarer medium divided by velocity of light in denser medium. देखा inversely proportional. Refractive index को velocity inversely proportional, तो mu d divided by mu r is equal to mu v r divided by v d. अब हम जानिचे रेरार मीडियम रे आलोकर गति डेंसर मीडियम अपेक्षा अधिका थाए. रेरार मीडियम रे आलोकर गति अधिका थाए, डेंसर मीडियम रे आलोकर गति कमी जाए. तो देखो इटा गोटे न्यूमरेटर रे बहुत बड़ संख्या अछि, तळे छोट संख्या, सो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1. Again, please keep in mind, गोटे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to a optically rarer medium is always greater than 1. Is always greater than 1. Clear? Okay? ये भी गोटे important point हमरा थिला. तो फाइनली हमें इठी ताको नोट करिक रखिबा. तो mu2 1 is equal to mu2 divided by mu1 is equal to v1 divided by v2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2. आगो को आहुरी आसीबो. ओके, टिके अपेक्षा करो. एंड इठी हमें गोटे आउट कंक्लूजन पाहिले जे relative refractive index of the denser medium with respect to rarer medium is equal to, okay, mu d divided by mu r is equal to v r divided by v d, which is greater than 1. Okay, आगो टिके नोट करिक रखिबा, परे दरकार पड़ी पारे आम पई. Okay, listen. Next आमे जिबा, देखो माने कर गोटे आमे लेंस कंसीडर करिबा. आगो को लेंस ऊपर बहुत कथा डिस्कशन करिबा लेंस थ्योरी रे. सपोज गोटे लेंस आमे कंसीडर करिबा, को आमे लेंस बोली कहिबा. विभिन्न प्रकार लेंस ऊपर आमे डिस्कशन करिबा. मु फॉर द टाइम बिंग गोटे लेंस कन्वेक्स लेंस तुमको मु देखै छी. बहुत प्रकार लेंस ऊपर आमे डिस्कशन करिबा को जाउछ आगो को. सो सपोज एटा गोटे लेंस. जनरली ये गोटे पर्टिकुलर मीडियम रे तयारी हिताए. एटा होची लेंस रो गोटे मटेरियल, लेंस मटेरियल जार की गोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थाए. ताको आमे ना देबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस. तार दी पटे जो मीडियम अछि ताहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू एम बोली जदि ना देबा, तो तुमको जदि मु पचारिबी दी
relative refractive index of the lens with respect to medium is equal to refractive index of the lens material divided by refractive index of the medium. Okay, এই जो the relative refractive index of the lens with respect to medium এটা greater than 1 হেই পারে, equal to 1 হেই পারে, less than মধ্য 1 হেই পারে. It depends upon the absolute refractive index of lens material and absolute refractive index of the medium. Listen carefully. যদি আমরা এই যে লেন্সর যে ম্যাটেরিয়ালটা, লেন্সর যে ম্যাটেরিয়াল, যে ম্যাটেরিয়ালর লেন্স তৈরি হইছি তার রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্সটা যদি অধিকা হইতিব মিডিয়াম র absolute refractive index ঠারু লেন্স ম্যাটেরিয়াল র absolute refractive index যদি অধিকা হইতিব it will be greater than 1. যদি লেন্স ম্যাটেরিয়াল র absolute refractive index আর মিডিয়াম র absolute refractive index দুইটা যাক যদি সমান হইতিব তাহলে it will be equal to 1. যদি মিডিয়াম র absolute refractive index টা লেন্স র absolute refractive index টু যদি অধিকা হইতিব তাহলে it will be less than 1. So it may be greater than 1, it may be equal to 1, it may be less than 1. Clear to all of you? So please keep in mind. तो एठी कौन हुए, एठी कौन हुए, एठी कौन हुए आमे लेंस थ्योरी रे डिस्कशन करिबा. क्लियर? ओके, माने टिके जस्ट तुमको मु एठी कहि दउची आ ऊपर आगु को आमे बहुत कथा डिस्कशन करिबा. जदी देखो जदि आमर आपको प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहा जाए, जदि दुईटा पैरेलल रे आसिला, सपोज दुईटा पैरेलल रे छाड़िबा आमे देखो जदि एक्चुअली हमरा ए जो कन्वेक्स लेंस ता होची हमरा कन्वर्जिंग लेंस बोली कहा जाए, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोली कहा जाए. तो जदि ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स absolute refractive index of the lens is greater than the absolute refractive index of the medium, जोटा कि जनरल केस आमे साधारणतः एयर रे हमर मीडियम ता थाए एयर आ जो लेंस ता तयारी हिता है ग्लास रे. तो जनरल केस होची एटा. ताहले लेंस रो absolute refractive index medium टू जदी अधिका हिता है ताहले रे गुडा को रिफ्रैक्शन हि सल्ला परे कन्वर्ज करिवे, तेनु करी आकू कन्वर्जिंग लेंस बोली कहा जाए. सेकंड केस देखो, जदि कौनसी कारणवशतः लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान हो जाई थाए ताले दुईटा रे जदि आमे आ ऊपर पकेइबा इंसिडेंट रे से पैरेलल ही कि ही चलिबे, आगो को पैरेलल ही कि जीवो, रिफ्रैक्शन तो हबो किंतु पैरेलल ही कि ही चलिबे. ओके, तापरे देखो से थर्ड केस हम देखिबा, थर्ड केस रे देखिबा जदि mu L is less than mu M तामे मीडियम ता ऑप्टिकली डेंसर ही गला, हमर लेंस रो मटेरियल ता ऑप्टिकली रेयर ही गला. ताले एठी कोन हबो, ई जो कन्वर्जिंग लेंस ता वर्तमान डाइवर्जिंग लेंस परिका बिहेव करिवो, रे गुडा को डाइवर्ज ही जिवो, कन्वर्ज न ही कि डाइवर्ज ही जिवो. ओके, या ऊपर सब आलोचना करिबा हमें जेतेबेले हमें लेंस थ्योरी डिस्कशन करिबा. क्लियर? तो आपको बेस करी कि तमरो छोटकाटिया प्रॉब्लम सब आसीबो. देखो प्रथम फार्मूला थिला हमरो refractive in absolute refractive index of a medium is equal to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in that medium. Okay, and इठू हमरा आ गोटे रिलेशन हमको मिलिथिला absolute refractive index of a medium is equal to wavelength of light in vacuum divided by wavelength of light in a medium. Okay, ए दीटा जाको फार्मूला आ ऊपर जो दिया जाइथिबा फार्मूला सब जदि हमें मने रखिबा ताहले हमरो जे कोनसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करि परिबा. देखो फॉर एग्जांपल फिजिकल सिग्निफिकेंस टू के बुझिबा, सपोज देखो मु तुमको एबे कहिबी, सपोज एटा थिला मोर वैक्यूम, एटा होची मोर सपोज गोटे मीडियम, एटा होची मीडियम माने धरिनियो ये होची वैक्यूम, ये होची मनकर ग्लास, ये होची मनकर ग्लास. हमें जानिचे रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, इट इज 1.5
1.5. The average value is 1.5. Clear? तार आर मीनिंग कौन? Absolute refractive index of glass is equal to 1.5 रो मीनिंग कौन? माने आलोक जते बेले गति करे वैक्यूम रे हम जानि छे c वेलोसिटी रे गति करे, which is maximum, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second बोली हमें भलो रे जानि छे। जते बेले वैक्यूम होची सबठो रेरेस्ट मीडियम बोली हम कहि परिबा, रेरेस्ट याठो रेरर मीडियम कहीं नाही, तेणु आलोक रेरर मीडियम रे फास्ट गति करे, तेणु जेहेतु ये होची रेरेस्ट तेणु करी सबठो अधिक बेगरे आलोक गति करे वैक्यूम रे। जते बेले ग्लास भीतर को आलोक आसिकी पसिबो ताले रिफ्रैक्शन हबो, रिफ्रैक्शन हेले डायरेक्शन चेंज हबो, जदि ओब्लिक इंसिडेंस दिबो डायरेक्शन चेंज हबो, वेलोसिटी चेंज हबो और वेवलेंथ चेंज हबो। कोन कांस्टेंट रहइबो? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहइबो, कलर कांस्टेंट रहइबो और फेज कांस्टेंट रहइबो। ताले वेलोसिटी जो परिवर्तन हबो केते गुना परिवर्तन हबो? 1.5 times reduced. This is the physical significance. Absolute refractive index of a glass is equal to 1.5 रो मीनिंग होची आलोक जते बेले वैक्यूम रो ग्लास भीतर को आसीबो तार वेलोसिटी टा 1.5 times reduce होई जिवो। You see this formula, you see this formula. Absolute refractive index of the glass is equal to 1.5 रो मीनिंग होची तामाने c divided by, देखो mu glass is equal to c divided by velocity in glass। तो इटू हमें कौन करीबा velocity of the glass is equal to c divided by 1.5। you just see physical significance को बुझो। तो ये जो velocity glass भीतर 1.5 times reduce हो जिवो, तो माने velocity of the glass will be equal, velocity of light in glass will be equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 1.5। ako tame divide kole jaha asibo tame jani parucho 1.5 रे जदि हमें divide करिबा ताले it is less than c। clear all of you? तो velocity गोटे मीडियम को गले velocity आलोकर कमी जाए, तेणुक आपको कहा जाए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर? सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माने मु तुमको जदि कहिबे एटा ग्लास न होई कि आउ कोन गोटे मीडियम, तो मु देखो एग्जांपल को आउ गोटे दूची। सपोज आलोक माने कर वैक्यूम रासिला गोटे मीडियम भीतर पसिला, आई डोंट नो व्हाट इज दैट मीडियम, कोन गोटे आर्बिट्ररी मीडियम नियो। सपोज आलोक रो वेलोसिटी मन कर थिला इठी c, आलोक रो वेग मन कर इठी हे गला c डिवाइड बाय 2। ताले मते कुहो आलोक रो गति केते गुण कमिला? 2 गुण कमिला। आलोक रो गतिटा 2 गुण कमी गला। आलोक रो गति 2 गुण कमी गला माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज इक्वल टू 2। क्लियर? बुझा पड़िला? तो आलोकर गतिटा जेते गुण कमे गोटे मीडियम रे सी होची एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जदि 2 गुण कमिला, जदि वेगटा 2 गुण कमिला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची 2। आमे जानि छे जेते बेले वाटर को आसीबो, जेते बेले वैक्यूम रो लाइट वाटर भीतर को आसीबो तार वेगटा 1.33 टाइम्स कमी जाए, माने अप्रोक्सीमेटली 1.33 टाइम्स कमी जाए, माने 4/3 टाइम्स कमी जाए, 4/3 टाइम्स कमी जाए। तेणु करी वाटर रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हे जिवो 4/3 व्हिच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.33। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर refractive absolute refractive index and relative refractive index। so वीडियो को मु वर्तमान बंद करूची, नेक्स्ट वीडियो रे आमे स्नेल्स लॉ ऊपर डिस्कशन करिबा। so thank you all, bye।